ओके, स्टेप 3 को स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ कैटाइंस 4 है, नंबर ऑफ एनाइंस 3 है। टोटल जो फॉर्मूलाज बनेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से 12 होंगे। और इसमें अब आपने कैटाइंस और एनाइंस के लिए इनकी वैलेंसीज को लिखना है, 3 + 3 और -3, और इसके बाद शिफ्टिंग करके इनको x और y के सफिक्स के तौर पे लिखना है 3 को। अब 3:3 जो हमारे पास होगी, जब उसको कैंसिल करेंगे तो 1:1 बन जाएगी, और हम लिखेंगे x1 और y1, इनके सफिक्स बन जाएंगे। और आपको पता है कि 1 को नहीं लिखते, इसलिए जनरल फॉर्मूला अगेन xy आपके पास आ जाएगी। यू गॉट दिस स्टूडेंट्स? स्टेप 3 में जनरल फार्मूला आ गया। अब हम स्टेप 3 में केमिकल फार्मूला स्टार्ट करने लगे। Its formula is again xy, and we will write all these formulas according to xy. So start with the bismuth, and you will write BIN, and this is called bismuth nitride. BIP, bismuth phosphide. BiPO4, bismuth phosphate. Okay, aluminium nitride, aluminium phosphide, aluminium phosphate. Next is chromium, chromium nitride, chromium phosphide, chromium phosphate. Next element is Fe, so we will write Fe, ferric nitride, ferric phosphide, ferric phosphate. Okay student, in the next video we will start with the step 1, 2.